announcements. In this video we will discuss about National Institute of Fashion Technology and other financial assistance schemes for students. The National Institute of Fashion Technology has its branches all over India for young aspirants who wish to take up fashion studies as their career. This college is established under the Ministry of Textiles, Government of India. हम लोग अब बात करेंगे निफ्ट स्कॉलरशिप की फॉरेन स्टडीज के लिए। तो ये काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो कल का जो सेशन था उसमें इसका हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो गाइज आई थिंक आफ्टर ज्वाइनिंग निफ्ट यू कैन अप्लाई फॉर दिस फॉरेन स्टडीज स्कॉलरशिप। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप निफ्ट में कैसा आपका जो है CGPA SGPA आता है और कितना अच्छा मार्क्स आप लाते हैं निफ्ट में ज्वाइन करने के बाद, कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है फॉरेन स्टडीज के लिए। तो पहला जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूरोपियन इंस्टीट्यूट $5,000 पर सेमेस्टर, अमेरिकन इंस्टीट्यूट $4,000 और ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट 3,750, एशियन इंस्टीट्यूट 3,000 और मिडल ईस्ट के लिए 3,000 पर सेमेस्टर आपको मिल सकता है। तो ये जो है ये सारा डिटेल था, लेकिन ये गाइस ज्वाइन करने के बाद का है। आपको जो स्कॉलरशिप अभी एडमिशन के लिए चाहिए वो कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आप कल का लाइव सेशन एजुकेशन लोन या फिर निफ्ट ज्वाइन करने के बाद आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है नीड कम मेरिट बेस, वो सब पूरा कल हमने जो है वो सारा डिटेल में ये बात किया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मैं जल्दी उसको भी रिपीट कर देता हूँ। तो अगर फैमिली इनकम 1.5 लाख है तो 100% जो है वो ट्यूशन फ्री आपकी माफ़ हो जाएगी, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से 2.5 लाख है तो 75% जो सेमेस्टर फी है ट्यूशन फी वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब 2.5 लाख से 4 लाख तक है 50% जो है वो ट्यूशन फी आपको वापस कर दी जाएगी। मास्टर्स प्रोग्राम PG के लिए 1.5 लाख तक अगर एनुअल इनकम है तो 75% ट्यूशन फी वापस कर दी जाएगी। एबव 1.5 लाख से 2.5 लाख है तो 50% ट्यूशन फी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। एबव 2.5 लाख से 4 लाख तक है तो 25% ट्यूशन फी आपको वापस कर दी जाएगी। गाइज again I'll request you, if you think that the content you study, please like the video and subscribe the channel, hit the bell button to get notification so that you will be the first one to receive the restricted content and other exclusive content and class announcements. So welcome to Ignite India Education, the India's largest online design education platform. Subscribe to our channel to get first access to exclusive content and new class in 1986, thus making it one of the most sought after college for the national and international fashion business. One of the mandatory requirements to obtain loan for NIFT is confirmed admission letter from the college. Some of the common points to keep in mind while taking an education loan for NIFT. The NIFT education loan includes the tuition expenses as well as the cost of books, library fees and other necessary requirements. While no upper limit is decided for the loan amount, banks generally grant loans that are in accordance with the educational costs of the institute. The processing fees for NIFT education loan ranges from 0.5% depending on the bank from which the loan is taken. Moratorium period for the loan is 1 year after the completion of the course.
The repayment period extends to a maximum of 15 years from the start of the repayment period. Some of the available lenders for providing loans to NIFT: PNB, SBI, Axis Bank, and HDFC. Sarthak, NIFT Financial Assistance Scheme. This financial assistance scheme is to provide financial assistance to meritorious, needy and deserving students belonging to the economically weaker sections of society. Applicability of the scheme: Sarthak, NIFT Financial Assistance Scheme, will be applicable to all the regular students of NIFT fulfilling prescribed criteria. The benefits of this scheme shall not extend to NRI students. Under this scheme, financial assistance to undergraduate students shall be provided as follows. Parental income per annum up to rupees 1.5 lakhs, 100% of the tuition fee will be refunded. Parental income above rupees 1.5 lakhs up to rupees 2.5 lakhs per annum, 75% of the tuition fee will be refunded. Parental income above rupees 2.5 lakhs up to rupees 4.0 lakhs per annum, 50% of the tuition fee will be refunded. Under this scheme, financial assistance shall be provided to postgraduate students at the campus as follows. Parental income rupees 1.5 lakhs per annum, 75% of the tuition fee will be refunded. Above rupees 1.5 lakh up to rupees 2.5 lakhs per annum, 50% of the tuition fee will be refunded. Above rupees 2.5 lakh up to 4 rupees lakhs per annum, 25% of the tuition fee will be refunded. Eligibility criteria for application: undergraduate and postgraduate students of the regular program of NIFT, excluding those admitted under NRI category. NIFT Scholarship Scheme for Foreign Studies. Eligibility criteria for application: undergraduate and postgraduate students of the regular program of NIFT, excluding those admitted under NRI sponsored category. Undergraduate students from semester 4 to semester 7 and postgraduate students reading in semester 2 and semester 3 would be eligible. European institutes $5,000 per semester. American institutes $4,000 per semester. Oceanic, Australian institutes $3,750 per semester. Asian institutes $3,000 per semester. Middle Eastern institutes, Israel, $3,000 per semester. Thank you for watching. Please like our video and subscribe to our channel. Hit the bell button to get first access to exclusive content and new class announcements.